Hello, good morning. How are you all? Good. ग्रेट ही होना चाहिए. तो आप में से कितने ऐसे हैं जो इस बार अपीयर हुए हैं? 2023 आप, रेस्ट नहीं. So when you are all are planning to appear in exam? 20? Okay. Okay. Means next year. So आप next year you are appearing, right? You have written prelims. So what was the result? Okay. So mostly आप लोग अभी I think you all who are planning to appear in 2025 are in graduations or you have completed the graduations. Okay. So have you any idea related to this exam? First of all, let me introduce myself. I'm Amit Narauni, right? And I'm here to teach you international relations. इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है, तो पहले हम एग्जाम के नेचर को समझते हैं कि एग्जाम का नेचर है क्या, राइट? तो क्लास वुड बी इन इंग्लिश, इट्स एन इंग्लिश मीडियम क्लास, बट वी कैन go through in bilingual, not an issues. The note will be provided in English medium, right? Now the style of my class is to have a two-way channel. ऐसा नहीं होगा सिर्फ मैं बताऊं, मैं चीज़ों को समझा दूं, आपको क्लियर ना हो या हो तो मुझे कैसे पता होगा. So it should be a two-way channel. It means you should also respond. Response should not be only correct. ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सही जवाब ही देना है, but what you get through the topic, so that you have to respond. Now what will benefit this? इससे क्या होगा? So this will help you to develop a confidence to answer the question. बहुत शाई नेचर होता है, बहुत लोग होते हैं जो शाई नेचर होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, बोल नहीं पाते हैं. बिकॉज दिस एग्जाम यूपीएससी इज नॉट ओनली अबाउट राइटिंग एंड गिविंग प्रीलिम्स एंड मेंस, इट आल्सो हैव वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट इज अ थर्ड फेज. ठीक है, so we will try to develop this habit also in the class, right? So if we talk about the international relations, तो इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या. तो आपने कभी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स देखे हैं? हैव यू स्टार्टेड गोइंग थ्रू द लास्ट ईयर्स पेपर, प्रीवियस ईयर्स प्रीलिम्स और मेंस? you have gone through? So if you go through, or those who have gone through, you would have noticed that the importance of international relation is increasing exam by exam. इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ मेंस में नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में भी इंक्रीज हो रहा है, राइट? ये so here we are going to discuss the importance of IR. ठीक है, so as we are discussing this topic, IR is not only a subject or a syllabus to the mains. ये सिर्फ मेंस में पूछने वाले सब्जेक्ट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस रिलेवेंस आपके प्रीलिम्स में भी है. सो इट कवर्स द प्रीलिम्स, द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर एग्जाम, दैट इज प्रीलिम्स. ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर, so you will notice that each year in prelims itself the importance of this IR is increasing exam by exams. ठीक है, then it will also help you in mains, though it is a part of the paper 2. IR is a part of paper 2 GS paper, right, which includes constitutions, Indian polity,
governance, social justice, and last is international relation. ठीक है, तो क्या इंटरनेशनल रिलेशंस की बाउंड्री सिर्फ पेपर 2 तक ही सीमित है? Does the international relations limit itself to the paper 2, GS paper 2? No. First, it will help you in prelims. Second, there is a part of a mains. Now if we talk about the mains part, so it will not only going to help you in paper 2 only, rather there is a questions in essay also, relevance of NAM. If you go through the previous year paper related to essay, there was a questions that what is the relevance of NAM, how India it impacting India, and NAM is related to India's foreign policy, non-alignment movement, right? Then it will help you writing in internal security, which is a part of paper 3. Now how it is important in international security? Now as we know, in internal security we just need to understand the security, how to disturbance, right? So there is a boundary disputes, there is a disturbance from external forces in India also, नहीं? पंजाब, राजस्थान, जैसे आप देखिए अभी पंजाब में या जम्मू कश्मीर जो अटैक हो रही है, जो अरुणाचल प्रदेश में जो बाउंड्रीज इंडिया के जो बाउंड्रीज हैं वहां अटैक हो रहे हैं, that is related to security. So the relations between India and its neighbor describe the internal security, yes or no? So to understand the, after understanding the concept of a relations between the two nations, between the neighboring nations, and if one nation keeps its relations good with its neighbor, it will not going to face the challenge of securities from the external forces, right? जैसे यूक्रेन और रसिया का वॉर देखिए, दोनों बाउंड्री कवर कर रहे हैं, वहां पर हमारे लिए वो इंटरनेशनल अफेयर्स है, दो रेस, बट उनके लिए तो वो सिक्योरिटी का थ्रेट है ना, एक दूसरे के बाउंड्रीज में इंटरफेयर करने का. So it will also help you in understanding the concept in internal security, which is a part paper 3, right? Now in paper 4, that is an ethics. There is also a concept of ethics in international relations. जब आप ethics का पेपर सिलेबस देखते हैं तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि एक कंसेप्ट है ethics in international relations. So this topic, international relations, is not only cover the paper 2, but it's useful in other papers also, right? So this is about the mains. If it talks about the prelims, the relevance of IR in prelims, so if you see the paper in 2023 itself, this year, if you go through the paper, there is a 10 to 12 questions directly from the IR. I'm not talking about those questions which you can cover under the geography also, mapping, ये किसका border है, ये किसका क्या है, right? उनको अगर मैं छोड़ भी दूं तब भी अगर हम देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस G20 से क्वेश्चंस है, ग्रुपिंग से क्वेश्चंस है, अफेक्ट इजराइल अरब पीस इनिशिएटिव, I mean there is a relations. So have you gone through the paper, this year paper? आपने पेपर देखा 2023 का प्रीलिम्स का पेपर? नहीं. आप इसके रिलेवेंस को समझेंगे कि अगर हमने कवर IR किया, राइट? So it is going to help in this also, right? Now its benefit relevance in increasing your analytical power also. अगर आप कंपैरिजन करें प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को, राइट? तो प्रीलिम्स में व्हाट यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस, यू नीड फैक्ट्स. प्रीलिम्स में आपको क्या चाहिए आंसर करने के लिए? में यूपीएससी में यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, जस्ट रिमेंबर द हिस्ट्री, yes or no? But to answer a questions related to IR in mains, you need to understand concept, and analytical thinking should be developed.
then only it is possible to write the answer in mains. क्योंकि जब आप क्वेश्चंस मेंस का देखिए तो उसमें क्या आता है, what is an effect of India US China agreement on India, discuss critically, analyze, evaluate. These are the keywords. It means they are not discussing, the question is not demanding what is the relations, you have to describe the relations of between US and China, rather it is demanding what are its effect on India. अगर यूएस और चाइना के बीच में आज रिलेशंस हो जाए तो उससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया के ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके इंटरनेशनल मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका जिसके साथ रिलेशंस है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. So the mains required to understand, it will help you to analyze, to thinking, it will improve your thinking power, right? And though that part of a analytical part of your understanding will help you to in the last part, that is an interview. Generally in interview, when you see, you all are here to get selected, so you have to face interview also. Without facing interview, you cannot clear this, right? So in an interview, the questions, all the questions what has been asked in interview to you, it consists 20 to 40% questions from the IR. Give your view on BIMSTEC, give a view on AUKUS, Quad. What do you think about this? How it is going to hamper India's relations? What is status of Indian diaspora? What will be effect of sanction by the Europe and US on Russia? How it will impact India? If you have noticed in the recent period, in a recent year development, the Indian foreign policy got an aggressive move. पहले क्या था, मूव एग्रेसिव नहीं थी. आजकल क्या मूव कर रही है गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्या हो गई, एग्रेशन शो कर रही है इंटरनेशनल रिलेशंस पर. द स्टेटमेंट बाय गिवन बाय आवर ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर्स एस जयशंकर, द काउंटरिंग द यूरोपियन नेशंस, so is an aggression. So how it is going to happen, whether the India has changed its policy from being a soft power to an aggression mode, from a back foot to front foot. Are you getting me? So this is a shift from the policy. Every nation has its own foreign policy related to its geography, economic, climatic conditions, populations, and international relations, neighborhood relations. So all it's depend upon their policies. So it will also going to help you in interview part. Yes or no? Clear? So now if we talk about that, how to cover the international relations then. So what are the ways? This has shows the importance, how it is going to help you. This will also help you because one among you would be selected for the foreign minister, foreign affair ambassador to some in the nation's country. You need to understand the relations. Diplomat, if you suppose you have chosen for the IFS foreign services, you would be posted in any other country representing India there. So it means you are representing India in that country. So you have to deal diplomatically. अभी आप देखिए एक रिसेंट मूव डेवलपमेंट अगर आप देखें तो यूके में खालिस्तान प्रोटेस्टर जो थे, they have done something wrong to the Indian embassy, right? China has many nations closing their relations in China. Are you getting my point? So how it is affecting the nations, how it is affecting the relations, a country with the another country. So to understand this, you have to develop the concept related here. Is it clear? Okay. Now if we talk about the subject, international relation itself, so it is a vague subject. अगर हम इसकी बात करें तो
हम बात करते हैं अगर आईआर की, तो कैसा इट्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जो बहुत वेग है, वेल डिफाइंड सिलेबस जिसका नहीं है। सिलेबस है, द यूपीएससी हैज मेंशन्ड द सिलेबस बट इट इज वेरी वेग, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अ लिमिटेड सोर्स ऑफ रिसोर्सेज वी कैन से। जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपके लिए पास सोर्स है, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, राइट, एनसीईआरटी यू कैन गो थ्रू इट। if you're studying geography then you can go with the many books available in the market, नहीं, हिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, एक साइंस एंड टेक के लिए बहुत सारी बुक हैं, but the resources related to IR is very limited, or we can say that there is a minimum resources available in the market. Why? The reason behind it is the vagueness nature of the subject. So if we say that it is an very vague subject, कंसाइज नहीं है ये। अब आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है, ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप इंडिया के टर्म्स में पढ़ते हैं, राइट, तो कितनी कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? अराउंड 200 हैं ज़्यादा, बट दोज विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन इज अराउंड 200। तो क्या सभी के साथ रिलेशंस पढ़ने हैं? फिर तो आई मीन एक 10 साल, एक डिकेड भी कम होगा सभी के रिलेशंस को पढ़ना और उनके हिस्ट्री को समझना और उनको याद करके रखना। Are you getting my point? So to minimize the efforts of the UPSC has mentioned a syllabus, but there is a syllabus that still it is a vagueness. Vagueness, the reason behind is non-availability of resources. Being a first class, we should understand the nature of the topic, right? देखिए क्या है कि first of all, the thing what most of the students go wrong is that two things they do not understand. The first, the nature of the subject, and the second, syllabus of the subject. अगर आप यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यूपीएससी की एक बहुत अच्छी बात है कि द पेपर विल नॉट स्लाइड इवन बियॉन्ड द सिलेबस। पीसीएस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी। तो सिलेबस से बाहर वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल। डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करने से हमें फायदा नहीं होगा जब तक हम सिलेबस को अच्छे से समझ नहीं लेते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर लेते हैं सिलेबस। किसी भी टॉपिक की अगर बात मैं करूं, नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक, क्लियर? So it is an vague. Now we have seen why it is vague, right? Because of its limited additions. Clear? Now, if we see, so IR is basically a contemporary based topic. मतलब ये करंट से रिलेटेड ज्यादा है। क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए, या इंटरव्यू की बात कर लें आप, या मेंस की बात कर लें, या प्रीलिम्स में, तो क्वेश्चंस विल बी मोस्टली फ्रॉम द करंट, स्पेशली फ्रॉम द प्रीलिम्स, स्पेशली इन प्रीलिम्स। If we talk about this, the most number of questions or percentage of questions which is asked in prelims is from the current. So it is a current based topic, right? लेकिन पूरा completely a current based नहीं है। So IR can be described, or you can say that curtailed into two parts. One is static, historical development, right? क्यों आज, as we know that today is a unipolar world, ठीक है, 1991 से पहले बाइपोलर, राइट? ये क्या है? हाउ द यूएसए हैज गेन पावर, राइट? हाउ, अगर आप देखें तो इंडिया इज शिफ्टिंग इट्स लॉयल्टी टुवर्ड्स अनदर नेशंस। आज जो रिलेशंस इंडिया रसिया के बीच में पहले थी, आज वैसा रिलेशंस नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स अनदर नेशंस। डिफेंस टाइज में भी आप देख लीजिए, एनर्जी सेक्टर में आप देख लीजिए, यस और नो? वेस्ट एशिया के साथ रिलेशंस इंडिया का पहले अच्छा नहीं था, अब अच्छा हो रहा है। सऊदी, कतर, यूएई। So we need to understand
the historical development of India relations, and without understanding the static portion of the relation of India and its country, the partner, we are not in a position to answer the questions. So though current held an important part in our syllabus, but still we need to understand the static, right? And the second dimensions of this topic is current. And this current development is not stopped after the class also. ये क्लास तो कुछ समय के लिए चलेगी, ठीक है. अब स्टैटिक हमने क्लास में डिस्कस किया, उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझा, ऑर्गेनाइजेशंस को समझे, कैसे काम करती है हमने ये समझा. बट जब रिसेंट डेवलपमेंट होगी, दैट हैज टू बी एडेड बाय योरसेल्फ. इट मींस द जॉब ऑफ अ स्टूडेंट इज टू ऐड व्हाटएवर चेंजेस. मान लीजिए जैसे हमने इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बीच में रिलेशंस के लिए पढ़ा, ठीक. मोस्ट ऑफ यू आर प्लानिंग फॉर द एग्जाम्स इन नेक्स्ट और नेक्स्ट ईयर. तब तक तो रिलेशंस में चेंज होंगे, या यस या नो. क्वेश्चंस अगर उस समय आता है जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप 2 साल पुराना उनके रिलेशंस के डेवलपमेंट को तो नहीं लिख सकते. गेटिंग माय पॉइंट. उसके लिए आपको कंटेम्पररी इश्यूज और करंट इश्यूज को इनकलकेट करना होगा अपने टॉपिक में, कि क्या क्या रिलेशंस में चेंजेस आई है, राइट. जैसे मान लीजिए कि आज इंडिया जो है नाटो का पार्ट नहीं है, ठीक, लेकिन हो सकता है जब आप एग्जाम दे तो इंडिया नाटो का पार्ट हो. तो चेंजेस है, डेवलपमेंट है. तो दैट डेवलपमेंट हैज टू बी इनकलकेटेड in your notes, and who is going to inculcate, who is going to add those informations in your topic is done by yourself. Are you getting my point? Right? Right? Now आप में से कितनों का सब्जेक्ट PSIR है? अच्छा, what's your optional means option. कोई नहीं. Okay. So now why I'm asking, the reason behind asking this options is this, that अगर PSIR आपका ऑप्शनल, जैसे आपने कहा you have a PSIR option. So in PSIR, political science and international relations, it has name itself. So here, what the international relations we are talking about, or we are going to discuss in the class, is for the general study paper. So this IR is for the GS. It is not relevant from PSIR, or it is not related to PSIR topic. इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप PSIR पॉलिटिकल साइंस के रेस्पेक्टिव में पढ़ते हैं, अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थ्योरम्स इन दैट आल्सो. बट जीएस में उसकी जरूरत नहीं है. जीएस में सिर्फ आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझना है और करंट डेवलपमेंट उसमें रखना है. दिस ओनली रिक्वायर्ड इन एन एग्जामिनेशन. They are not going to ask you the realistic ideology of the international relations, idealistic approach of international relations. ये जीएस में पेपर नहीं है, ठीक है. Are you getting it? So it is different from the political science international relations. तो हम उस अप्रोच पे भी नहीं पढ़ेंगे और ना ही क्लास को उस अप्रोच पे लेके चलेंगे. So why I am saying this is just because we need to constrain ourselves within the boundaries of the syllabus. आपने कहीं और भी डेमोज लिया, क्लासेस लेंगे, तो हो सकता है उस क्लास में आपको टू फैसिनेट यू दे कवर द theoretical part of the PSIR, but that is not going to help you in any way in the GS if unless and until you have an optional. Are you getting my point? तो यहाँ पर हमें theorems की पढ़ने की जरूरत नहीं है, theories पढ़ने की जरूरत नहीं है जो IR से related PSIR में है. Here we need to just restrict ourselves to the GS part third, right? Now why it is necessary? Because writing an GS paper you have a constraint of time. Within 3 hours you just need to answer 20 questions. और हर पार्ट में पेपर 2 अकेला ही सिर्फ IR नहीं है. It parts constitutions, governance,
social issues, social justice, which is again a policies and programs of the government related to current, right? Then again it comes the IR. तो वहां पर आप बहुत ज्यादा वास्टनेस की जरूरत नहीं है, जहां पर बर्डन नहीं लेने का, हमें वो भी पढ़ना है, right? Just need to focus on the historical part of the India-US relations, India-Pakistan relations, India-China relations, and the current development. That's all. No need to go beyond the syllabus which is mentioned by the UPSC. ठीक है, तो हमने यहां पर ये भी देखा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर. वहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस हमें पढ़ना है, जिनका भी ऑप्शनल होगा आप वहां पर PSIR में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, लेकिन उसका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगा. गेटिंग माय पॉइंट? बट यहां पर आपको अपने आप को कंस्ट्रेन करना है विद द सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, यस और नो, राइट? So as we are discussing that it contains a two part, that is static and current, right? Now मान लीजिए कि the static part questions will also be related to the current part. जैसे have you heard the organization named WHO? क्या है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कोविड के दौरान इन फ्रॉम द 2020 राइट, जब कोविड आया था एंड ऑल हैज द वर्ल्ड हैज बीन शट डाउन, लॉकडाउन, द WHO हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट व्हाट इज मेंट फॉर. So there was a question in 2020 related to the relevance of WHO. तो इसमें आपको उसका हिस्टोरिकल स्टैटिक पार्ट से लेकर के हाउ इट हैज लूज इट्स रिलेवेंस, वेदर इट इज यूजफुल और नॉट. इट मीन्स यू नीड टू राइट द आंसर ऑन WHO, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशंस बिटवीन द दीज टू कंसेप्ट, दैट इज स्टैटिक एंड करंट. क्योंकि मैंने जब आपसे कहा कि करंट का पार्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन IR इज रिलेटेड टू करंट, तो देयर इज बी एन अनदर क्वेश्चन कि सर अगर करंट से ही क्वेश्चन है तो हमें स्टैटिक क्यों पढ़ना है फिर, राइट? दिस क्वेश्चन मे बी अराइज कि सर अगर करंट का ही क्वेश्चन, जैसे आप प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन देख रहे, वी विल डिस्कस सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द मेंस एंड प्रीलिम्स आल्सो. हम देखेंगे, वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ दिस, हम सब देखेंगे. ठीक है, तो देयर वुड बी अ क्वेश्चन कि सर अगर क्वेश्चंस मोस्टली 80 to 60 to 80%, 70% क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट, so why to invest our energy in studying the static part? Yes or no? So to answer to this question is, so without understanding the background of any organization, without understanding the background of any institution's grouping relations, you cannot write an answer on their current situations. क्योंकि अगर क्वेश्चंस UPSC is not going to ask a direct question, this is not a nature of an UPSC, so it will always twist the questions. और अगर आपने सिर्फ करंट पार्ट को याद किया है related to relation, so you are not in a position to write the answer unless and until you have an understanding on that subject. To develop an understanding on that subject, we need to read the static background of that. Is it clear? और तो नहीं हो रहे? ठीक है, चलिए. So now this is, now what has to be done then? कि अब क्या करना होगा फिर इसमें हमें? So what is required? So if we talk about the requirement, so here the two thing is required. अगर हमें करना है क्या है, फिर हमने तो ये समझा, नेचर समझ लिया यार क्या है कैसे, हमें करना क्या है, ठीक? तो इसको अगर हम व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट इज रिक्वायर्ड, हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट में. वन,
what you expect from the class. And the second, what the work or the job is done by you from your context, right? So what is to be done by the students. ठीक है, तो इनको हमें समझना है. तो क्लास विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट regulation in the class, means regular classes. Then notes provided by the classes. Okay, this will, and this note will be cover static part, historical background and reasons for being an establishment, and current development. Okay, now the job of your is to mainly focused on this part. ये तो change नहीं होगा. Whenever you are going to appear for the exam, the static is not going to change. It will be there. But the change in the relation will be for the current part. Okay? So, newspaper, which is an important part of your journey. Newspaper is not only important for the IR. Though we are discussing an IR topic, so that's why I'm saying it is an important, but newspaper is not only help you in IR, it will help you in prelims. If you have seen the 2023 questions, you would have acknowledged the importance of newspaper. Help you in mains, science and technology, newspaper is going to help you. It will help you in writing the essay. Nowadays, the nature of an essay which has been asked by the UPSC, so there no one can predict. पहले क्या था, वो सभी टॉपिक, I mean each subject, historical essay, political science essay, right, philosophical essay, but for the last 2-3 years the pattern of essay has completely been changed. So it requires a wide area of your knowledge to be developed. Clear? Then next is atlas. Many of the students of an opinion that atlas will help only in the geography, or atlas plays a role only in geography. Though it is true, but it will also help you understanding the relations between two nations. क्योंकि हिस्टोरिकल, जब भी आप रिलेशंस की बात करते हैं तो रिलेशंस ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट होती है, ड्रिवन होता है, राइट? अब इंडिया और चाइना रिलेशंस इसके ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है. यस और नो? इंडिया, चाइना कैन नॉट अटैक फ्रॉम द हिमालयन रेंज. नेपाल एंड भूटान आर प्लेइंग अ बफर स्टेट टू इंडिया. इंडिया क्यों नहीं चाइना का क्लेम तिब्बत पे एक्सेप्ट कर रही है? As soon as India accept the claim of China on Tibet, it will become a direct neighbor to the India. Are you getting my point? So geographical reason है उस. So for that we need to understand the locations. We need to understand the boundaries of a nations, right? Then previous year questions. This is the most important part. ये जो आपके साइड का है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द स्टूडेंट साइड्स, this will be applicable to your whole journey of preparation. This is not only for the IR. I'm not talking just about the IR, but आपके whole preparations of your journey till you get selected, this is going to be intact. कोई changes नहीं होंगे यहाँ पर. Are you getting my point? Now why up previous year questions? क्वेश्चंस हो सकता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों? यूपीएससी तो रिपीट करती नहीं क्वेश्चंस. तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों चाहिए?
एग्जैक्टली आप अपना रिज्यूम बनाते हो, बायोडाटा बनाते हो, क्यों बनाते हो? कि जो आपको नहीं जानता है वो आपके रिज्यूम से या बायोडाटा से आपको जान सके। फेसबुक पर आईडी है आपका, यस और नो? इंस्टाग्राम पर आईडी है आपका, वहां आप अपने बारे में लिखते हो, डिस्क्राइब करते हो, ताकि अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट हो, अगर कोई अननोन पर्सन आपके बारे में थोड़ा बहुत आपके लाइक्स और पोस्ट से जान सके। तो accordingly, previous year questions paper will help you to understand the nature of examination. ये टॉपिक बहुत वास्ट है, तो हमें कहाँ कंस्ट्रेन करना है, किस पे फोकस करना है, यूपीएससी कैसे एग्जाम क्वेश्चंस पूछ रही है, किन पे फोकस ज्यादा करती है, वो हमें पता कैसे चलेगा? Previous year paper, right? Now this previous year question paper is acts like an GPS to your journey. Whenever you go somewhere, anywhere, so you on the GPS, hey, Google पे हमें GPS on कर लेते हैं, map, unknown locations, so according to that you move to that locations, yes or no? So this previous year plus syllabus will guide you, so this is going to guide your journey and this will keep you within the limit. क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस नहीं होगा, मान लीजिए आपने सिलेबस नहीं देखा, तो आप इंटरनेशनल में थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, फिर आप इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर के व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, फिर अगर आपका ऑप्शन नहीं भी है पॉलिटिकल साइंस, फिर भी आप उसका एक पार्ट को कवर कर रहे हैं, यस और नो? व्हाई? बिकॉज यू हैव नो आइडिया रिलेटेड टू द सिलेबस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो हिस्ट्री में आप एंशिएंट मेडिवल भी पढ़ रहे हैं फॉर द मेंस, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। So how you will be in limit? So through the syllabus, which will constrain you to go beyond the limit, which will restrict you within the limit, to be in a limit, to be in a premises, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को बहुत अच्छे से देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, तो इट विल गेट एन ईजी टू यू अंडरस्टैंड द यूपीएससी एग्जाम। As soon as you dissect the syllabus of an UPSC, the sooner you will get selected. Most of the candidates or aspirants, they lack in having a syllabus. Syllabus आपके पास होगा, आपने सिलेबस खरीदी होगी मार्केट से, खरीदी ही नहीं मार्केट से सिलेबस, लेकिन सिलेबस खोलकर देखा है आपने? ईच टॉपिक का सिलेबस आप डाइसेक्ट कर किया है आपने? आपने किया है। कितनों ने किया है? कितनों के पास सिलेबस है? सबके पास है, ठीक है? मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रिपरेशन इज टू बाय अ सिलेबस। सिलेबस खोल करके सिलेबस देखा आपने, डिटेल सिलेबस को कितना टाइम दिया है आपने? इन नंबर ऑफ आवर्स, इफ यू टॉक इन नंबर ऑफ आवर्स, how many number of hours have you provided given dedicated to the syllabus? 30 minutes। 30 मिनट्स में तो प्रीलिम्स का सिलेबस भी कवर नहीं होगा। टॉपिक कैसे आप डिसाइड, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं दैट्स आई अंडरस्टैंड कि वो मार्केट में है, ठीक है, दैट इज एन डाइसेक्शंस, बट इट इज needed by your side to understand the syllabus. So that's why before starting a class, the focus of the class should be on discussing the syllabus, ताकि हमें क्या है ना, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़े। एक तो सब्जेक्ट ऐसे ही वेग है, कोई मार्केट में पर्टिकुलर डेडिकेटेड बुक्स नहीं है इसके लिए, राइट? इट्स अ ओपन सी, ओपन स्काई, so we need to be in limit. So this will help you to be in limit. ठीक है? Now one thing what you can do here is also, if you can go through the
राज्यसभा टीवी, and that is basically related to debate. ठीक है. Now there is no book, there is no and it is current affair magazine, whatever magazine you are comfortable in. Through this, देखिए, newspaper will help you to understand the nature. It will develop your analytical power, analytical thing, which is necessary, importance, fundamental for your selection. ठीक है. करंट अफेयर मैगजीन इसलिए ताकि आपको छोटे छोटे डिटेल्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े, वो आपको एक जगह बना बनाया मिल जाए, आप उससे पढ़ लीजिए, एक सेपरेट नोट उसमें से आप अपने बना लिया, जो भी आपका यहाँ पे क्लास नोट्स है तभी उसमें आपने ऐड कर लिया उसे, बस पेपर से अलग करने की जरूरत नहीं है. पेपर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और डेवलप, रादर इट विल हेल्प यू टू डेवलप द एनालिटिकल थिंकिंग विच इज नेसेसरी टू गेट सेलेक्शंस. क्योंकि आपका सेलेक्शंस प्रीलिम्स नहीं दिलाता है, प्रीलिम्स इज जस्ट एन स्क्रीनिंग. इट विल only help you to sit an examination mains. The main portion of your selections will be dealt in mains, right? And along with this, the most important part is answer writing. ठीक है. So this is required from the aspirants. Now this is the key to your selection. आप एग्जाम 2025 दीजिए, 24 दीजिए या इस साल दीजिए, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग द आंसर. बहुत लोग क्या करते हैं जनरली कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स. Prelims is the first step, so we should cover this. Focus on your mains. Prelims आप अगर आपने mains को बहुत अच्छे से cover कर लिया तो prelims in the last 2 months you can clear. क्योंकि जब आप prelims नेचर, अगर आप पेपर का यूपीएससी का पेपर का नेचर देखो तो वो अब फैक्ट बेसिस नहीं है. पहले क्या था, आप एलिमिनेशंस मेथड लगा सकते थे, अच्छा पहला नहीं पता दूसरा पता है तो इट विल बी कर लिया. अब ओनली वन, एनी टू, एनी थ्री, इट मीन जितने स्टेटमेंट है सबके बारे में आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. देन ओनली यू आर इन ए पोजिशन टू क्लियर द प्रीलिम्स. यस और नो? So how it will help? It by its understanding the concept. And how you will clear a concept? Through preparing for the mains and through answer writing. Once you have commanded on this part, on the answer writing part, the chance for selection increased by 50%. Getting my point? Yes or no? This is clear? So this is an, we have seen importance of IR, we have seen what has to be done. Now here the if we talk about the job, or it is talk about how it will help you how to proceed further. So one is the classes. So from the classes you will get a regular class. So try, do not skip the class. क्लास को स्किप मत कीजिए, ठीक है. क्लास में नोट्स, एंड ट्राई ऑल्सो टू फोकस ऑन अ सिंगल. क्या है ना कि बहुत बार कैसा होता है कि मान लीजिए जैसे आप कहीं क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स कहीं और क्लास कर रहे हो, आपने डिस्कस किया कि हमने आईआर, हमारे क्लास में भी आईआर चल रहा है, उनका भी आईआर चल रहा है. बट इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि समवन some classes provides to can say attract the students, given unnecessary
topic from the PSC which is not relevant for the GS paper. आपने जब वहां डिस्कशन किया तो हमारे में ये पढ़ाया गया, हमें वो पढ़ाया गया, फिर आपने हमें तो ये पढ़ाया नहीं. सकता है ना कि जब बात करें बाहर तो हमारे क्लास में ये हुआ, हमें तो ये हुआ ही नहीं. तो क्यों नहीं हुआ, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. और ये कैसे पता चलेगा? थ्रू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर. द बेस्ट वे टू जज अ क्लास these, because none of a human being is complete in itself. नहीं तो मुझे एज अ मेंटोर हर चीज का नॉलेज हो सकता, नहीं एज ए एस्पिरेंट और एज अ टॉपर यू हैव ऑल. सब में लैकुना है. बट हाउ टू जज? जैसे आप फोन लेने जाते हो तो कैसे जज करते हो ये फोन मेरे लायक है या नहीं? थ्रू द स्पेसिफिकेशंस. इसमें इतने कैमरा मेगापिक्सल है, ये mAh बैटरी इतना है, 5G है, 2G है, 4G. yes or no? So through that channel, through the syllabus and through the previous year papers, you can also decide the class. And once you decide a class, that now we have to join the class. So don't keep class until it is and very important. And as being an student, you have only one important job, that is an. Is this clear? ठीक है, चलिए. So let's start now. We'll start discussing our syllabus. Any questions from here? Any questions? चलिए. So we will come to the. This is a syllabus given in UPSC by itself. So if we talk about the first syllabus is India and its neighborhood. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इंडिया नेबरहुड्स का क्या मतलब? इसमें क्या क्या पढ़ सकते? आसपास क्वाड नेबरहुड है. क्वाड, क्वाड की बात की ना आपने, क्या वो नेबरहुड है? नेबरहुड का क्या मतलब है? पड़ोसी. तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, पड़ोसी का मतलब है कि ऑल दैट नेशन which is connected to India through land and sea. हाँ, जो लैंड से भी जुड़े हों और मैरीटाइम भी हो. सिर्फ लैंड नहीं, किसी पाकिस्तान के साथ हमारा लैंड बाउंड्री हो रहा है, वो पढ़ना है, नेपाल पढ़ना है, भूटान पढ़ना है, वो भी पढ़ने हैं जो हमारे मैरीटाइम, जैसे श्रीलंका, मॉरिशस. यस और नो? So to relations between India and its neighbor means those nations or those neighboring country which share boundaries with India in both the terms by land boundary और sea boundary, right? तो कितने nations हैं ऐसे अगर हम include कर ले तो? 7. कौन कौन से बताइए? चलिए, फर्स्ट पाकिस्तान, चलिए अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका. आपने 7 बोला था, मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है ये. म्यांमार 8 तो हो गया अभी तक, और मॉरिशस, Maldives, sorry, not Maldives, not Mauritius, Maldives. So these, जिसमें से ये जितने भी बाउंड्री है ना, दे आर द लैंड बाउंड्री, दे आर मेकिंग ए लैंड बाउंड्री. अगर आप नॉर्थ वेस्ट से बात करते हैं, पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान,
म्यांमार, देन बांग्लादेश. म्यांमार हमने कवर किया, राइट. देन श्रीलंका, मालदीव्स आर अ maritime bond, means those nations which are sharing boundary with the India from the sea, the maritime. Are you getting my point? Okay. Now this topic, India and its neighbor. First of all, we have seen the neighborhood means the boundaries which share its border with India by the land and through sea. So any development in this area, any development in this neighboring country is our point of view of concern. ठीक. जैसे in 2022 there was a question, अगर मैं बात करूं 2022 की, एक क्वेश्चन है 2020, देख सकते हैं यहाँ पर. That India is an age-old friend of Sri Lanka. Discuss India's role in the recent crisis in Sri Lanka in the light of preceding state. And this question was asked in 2022. और आप यकीन नहीं मानेंगे, since the last 5 years, this is the first question from India neighboring. From 2018 to 22, there was no mains in mains. I'm talking about the mains was asked on the first topic, that is India and its neighborhood. Why? Because there was no development. Okay. So that part, that first part, that India and its neighborhood, it means we have not only understand, and we not only do the study related to the relations of India and the neighbor, but also we need to understand that any development is happening in that country. जैसे अफगानिस्तान में टेक ओवर कर लिया तालिबान ने, how it is going to impact the relations of India and with the relations, right? Now the crisis which has been faced by the Sri Lanka, that is an economic crisis. Yes or no? पढ़ा होगा आपने, सुना होगा एटलीस्ट. इकोनॉमिक क्राइसिस सुना होगा, श्रीलंका में हो गई थी. या फिर मान लीजिए कि श्रीलंका ने कोई पॉलिसीज लेकर आई तमिलियंस के अगेंस्ट. दैट इज वन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका इज आल्सो तमिलियंस, राइट. अगर वहां पर कोई ऐसा रिलेशंस डेवलपमेंट करती है वो, तो इंडिया कैसे इंपैक्ट होता है उससे, या कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है नेशनहुड में, नेबरहुड में, उसका इंपैक्ट इंडिया पे कैसे है. So this question is directly from the first topic of the UP, that is India and its neighborhood relations. So through this we can say, if we dissect the syllabus, so we can say that we do not need to read only the relations between India and its neighborhood. Rather, if any development happens to in that neighborhood country, भूटान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, वो कैसे इंपैक्ट या इंडिया कैसे हेल्प कर रहा है. जैसे अभी पाकिस्तान में रिसेंट आपका इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया वहां भी चल रहा है, राइट. सो देयर वुड बी अ क्वेश्चंस. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चंस व्हाट वी नीड इज, इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड, वी नीड एन स्टैटिक आल्सो. अगर फ्रेंड है आपका, आपने पहले कभी हेल्प किया होगा, रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस लगा, अगर हम किसी को फ्रेंड्स बता रहे हैं तो रिलेशंस, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशंस होगा तभी तो. So we need to discuss that, but we have a limitations of a word limit, and then also in the same questions we need to discuss the role of India in the recent crisis, कि अब जब वहां इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्या कैसे हेल्प कर. इस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए we need to understand the historical background of an India and Sri Lanka relations, and also we need to inculcate the current part, how India has helped
whether India has provided them any financial assistance or through any assistance it has helped or not? Are you getting my point? So this is first topic. This we will discuss later. This the main motive behind the question. We need to understand the nature of the syllabus. Okay? Any doubt? No? So this is the first topic. Okay? Now moving to the second point of the topic, that is bilateral, regional and global group. The second topic says the bilateral relations. Now what is bilateral relations? Say a relations between two nations. That is a bilateral relation. Multilateral relations, जहां पर दो से ज्यादा, जैसे क्वाड, though it is a grouping but it is a multilateral group, जहां पर चार लोग हैं. Quad itself defined a four, जैसे थर्ड को हम थ्री कहते हैं, क्वाड को हम फोर कह सकते हैं, right? So in this relations we need to understand the bilateral relations, the second topic. Now what type of relations? Bilateral relation means what? अब 200 कंट्री है ना, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, मुझे भी आइडिया नहीं कितना है, बट अप्रॉक्स 200 कंट्रीज तो हैं, ज्यादा ही होंगे, बट राइट. क्या सभी के साथ पढ़ना है हमें? गेटिंग माय पॉइंट? तो कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? फर्स्ट, द इंपॉर्टेंट कंट्री, चाइना, रसिया, यूएस, जर्मनी, यूरोप एंड नेबरिंग कंट्री. So in this bilateral relations, the relations of India with its neighbor. अब इंडिया पाकिस्तान कोई एग्रीमेंट साइन करती है तो बायलैटरल रिलेशंस है या नहीं? इंडिया चाइना अगर कोई रिलेशंस, कोई एग्रीमेंट, कन्वेंशन साइन करती होगा, ट्रीटी साइन करती होगा, तो बायलैटरल रिलेशंस है या नहीं? बांग्लादेश के साथ सिमिलरली वैसा करती है तो. Getting my point? And with the rest of the India, Japan, India, Kuwait, India, UAE, India, France, India, USA, India, Singapore. You're getting my point? So in this bilateral relations, we need to study the relations of India with its neighborhood. जो लिखा है यहाँ पर रीजनल. Regional relations mean in regions, in the countries, like, or not only the neighborhood but also in the Asian countries, South Asian countries, Southeast Asian countries and the world. European, intercontinental relations, और एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट, जैसे अफ्रीकन नेशंस के साथ भी, साउथ अफ्रीका के साथ भी हमारा रिलेशन है, नाइजीरियन के साथ भी, कनाडा के साथ भी हम कर रहे हैं रिलेशंस. Get my point, right? So in this bilateral relations covering the relations of India with the regional groupings, countries and to the world. Next, global groupings. Global groupings, Quad, AUKUS, BRICS, ASEAN, SAARC. Regional groupings is SAARC, BIMSTEC, NAM. Regional है ना, South Asian Associations. BIMSTEC is also a regional grouping. It has been ideas of the Indias and all this with the Indian Ocean regions. Yes or no? Right? So here the BIMSTEC, और BIMSTEC देखिए क्वेश्चंस में पूछे गए, right? ASEAN, SAARC, NAM, OPEC. Is India as a part of OPEC? वो ग्लोबल, यस ग्लोबल. अब हम बात करेंगे, ये रीजनल की बात कर रहा हूं मैं, राइट? अगर हम ग्लोबल की बात करेंगे तो आपके क्या हो गए? ब्रिक्स,
इंटरकंटिनेंटल है आपका, साउथ अफ्रीका भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, नहीं ब्रिक्स हो गए, राइट, क्वाड हो गया, आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स अगर हम बात करें तो आपका जैसे ब्रिक्स, क्वाड, राइट, इसमें ग्रुपिंग्स में इंडिया जिसका पार्ट है उसका भी हमें पढ़ना है, राइट। देन एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो ऐसे एग्रीमेंट जिसमें इंडिया पार्ट हो, जैसे एससीओ, व्हाट इज एससीओ? शंघाई कोऑपरेशन, यस और नो? उसके एग्रीमेंट से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया का इंटरेस्ट पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? सपोज कीजिए कि इंडिया यूएसए की पॉलिसीज और चाइना के बीच एग्रीमेंट होती है, ठीक? या फिर आप देखिए कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उस पे यूरोपियन नेशंस और वेस्ट नेशन, हम जिसे बात करते हैं नॉर्थ डिवाइड है ना, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ मीन्स डेवलप्ड नेशंस एंड साउथ मीन्स अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशन, राइट, दिस आर डिस्टिंक्शंस, वर्ल्ड का सिनेरियोस को डिस्टिंक्ट करके रखा हमने, ठीक है। तो अमेरिकन्स, यूरोपियंस, दे पुट सैंक्शन ऑन रशिया, उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर कैसे पड़ेगा पॉलिसी का? या फिर देयर इज वन यूएस पॉलिसीज दैट रिलेटेड टू H1B वीजा, सुना है आपने? H1B वीजा किसी ने, क्या है ये, किससे रिलेटेड है? यूएसए, बट रिलेटेड है इसका, यूएसए का ही रिलेटेड, इमिग्रेंट, यस, जिनको वो वीजा देता है फॉर द प्रोफेशंस, इसमें वो रूल चेंज करेगा। तो अगर ये रूल चेंज करता है तो इंडियन डायस्पोरा जो वहां इंडियन काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स जो है इंडिया का, उस पर क्या असर होगा, उस पर इंडिया की इकोनॉमी पे या इंडिया के रिलेशंस पे क्या असर होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए जो वहां पर जॉब कर रहे हैं कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट लॉज बन जाए जिसकी वजह से इंडियंस वहां पर जो नंबर में वो वहां जॉब के लिए जा रहे थे वो नहीं जा पाए, इंडिया के ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा, यस और नो? आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? So this is be studied under the second part, right? अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें, देखिए एक तो आप ये देखिए जो हमने देखा था ग्रुपिंग्स, रीजनल ग्रुपिंग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तब, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज ए पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क? अब दोनों, अब यहां पर हमें क्या करना है, मैं बाकी क्वेश्चन, सपोज कीजिए सिर्फ यही क्वेश्चन है आपके पास। Now here we will also understand to develop the habit of understanding the demand of the question and to write an answer. Okay? Now, do you think that BIMSTEC is a parallel organization like SARC? It means here the question, demand of the question is to a distinctions between, अब यहाँ पर आंसर yes या no में नहीं देना है, yes I think, yeah, no I don't think, this is not required. What required is structural and its objective. तो बिम्स्टेक का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उससे, और साक का बिम ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बना, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, क्या बैकग्राउंड था उनके पीछे बनने का, क्या मिलिट्री है, क्या ये मिलिट्री अलायंस है, इकोनॉमिक अलायंस है, रीजनल अलायंस है, या इंटरनेशनल अलायंस है? So this will understand when we will see the historical perspective related to this. Here the comes the role of a static comes in play, but this is not beyond the syllabus. Second part of the regional group has been mentioned from there, 2020 बात कर रहा हूँ, right?
right? So do you think that BIMSTEC is a parallel organization like SARC? What are the similarities and dissimilarities? यानी दोनों के फंक्शंस, काम करने का तरीका. सिमिलैरिटीज का मतलब मेंबर्स क्या, ग्रुपिंग क्या, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या है. सिमिलैरिटीज दोनों में डिफरेंस. अगर एक ही है तो दो क्यों बना? अगर एक ही काम है सबका, मान लीजिए का काम एक ही है और मेंबर भी एक ही है, नंबर ऑफ मेंबर्स पे भी तो डिपेंड करता है ना कि बिम्स्टेक के मेंबर सात के मेंबर हैं या नहीं, या दोनों के मेंबर सेम है, फिर दो क्यों बना? तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज भी देना है उनके बीच में. सिमिलैरिटीज ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन, सिमिलैरिटीज स्ट्रक्चरल, मेंबर्स. अब स्ट्रक्चर में मेंबर्स आ जाते हैं आप, फाउंडिंग मेंबर एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर. ऑब्जेक्टिव, एम्स, फंक्शंस has to be calculated, right? Then how are Indian foreign policy objectives realized by forming this new? अब यहाँ पर इंडिया, पहले हमने इन दो कंटेक्स्ट में नहीं लिखा आंसर, हम कहाँ लिख रहे थे? बिम्स्टेक और सार्क. नाउ द थर्ड sentence of the, it means it consists 3 questions, 200 words or 250 words. आपको 3 क्वेश्चन. Now you can imagine the amount of pressure while writing the answer. it time आप 5 से 7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते. 180 आपको 3 घंटे में, और ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 4000 वर्ड लिखना, अराउंड 4 ऑलमोस्ट अगर बात करें लिखना. ईच क्वेश्चंस को आप accordingly time देंगे, yes or no? So here you are attempting a 3. So UPSC has, though it is a simple questions, but it has clubbed a many number. पहले आपके बारे में बताना है similarities है या नहीं. So this questions, similarities and persons, is been the structural difference and similarities. Third, how are Indian foreign policy objectives realized by the following sections? This question is not a current based question. This is a static based question. हमें नहीं पता होगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल क्या है, कैसे लिख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है या नहीं. Getting my point? So to write this answer, we need to understand the historical approach, historical dimensions of this question. Then only it will be in a position. आपने सिर्फ बिम्स्टेक और सार्क के बारे में पढ़ा है तो आप इसको नहीं कर सकते. Co-relations, inter-relations. There is an inter-relations between these two organizations. आपने अभी तक पढ़ा होगा इन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कभी सोचा है कि दो अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं तो क्यों जरूरत पड़ी एक दूसरे? will develop, this is known as analytic, which and सिंपल है ये देखने में, that's required an analytical thinking, कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं. नाउ अगर आप इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स की बात करें तो हाउ विल I2 या इजराइल यूएई grouping transform India's position in global? So this is also related to the our group या part है. You're getting, yes or no? So this is the second part, and also it affecting its India's interest. या इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है. आप देखिए सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन पे बात कर रहा था, हाउ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल विल बी अचीव by getting my point?
now the third point of our syllabus is effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest. इसमें हमें क्या पढ़ना है? Under the third, what we have to do, simply that saying that effect of policies and politics. Example दिया मैंने आपको, पॉलिसी का इंटरनल मैटर है, कंट्री का लॉज स्टैब्लिश करने का और पॉलिसीज का इंटरनल मैटर है. यस और नो? यस और नो? So this is the internal matter of you. They can regulate their visa. But how it is affecting to India? And not only the developed nations. ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोप या यूएस के पॉलिसीज, बट डेवलपिंग नेशंस में भी अगर कोई पॉलिसीज बनती है, जैसे श्रीलंका ने अगर तमिलियंस को लेकर के कोई पॉलिसीज बना दी, द ग्रांटिंग देम और नॉट ग्रांटिंग रिकॉग्निशंस देयर कंट्री, that will also affect the Indian politics. Major part of the Tamilians who are residing in Sri Lanka are demanding actions from Indian. आपने नाम, that was Tamilians के जो श्रीलंका में काम कर रही थी. Yes, it's a group. Okay. Revenge में our honorable Prime Minister was assassinated. Rajiv Gandhi assassinated. Policy उनके अपने यहाँ no, but we have also China's policy restrict. अब एक example, दूसरे example से देखिए, we are exporting some. Now, if any country who is importing an Indian good put heavy taxes on import, effect होगा Indian सामान यहाँ से जा रहे, वो महंगा हो रहा है, effect हो रहा है. So yeah, the policies is not, and politics is not only related to the political point of view, but also economic, cultural policies, social policies, and role of Indian diaspora. अगर आपको याद हो, when the Trump was a president of US or Biden, वहाँ पर एक रैली हुई थी, the Indian Prime Minister. Second thing, I think that you been knowing that Australia is declared the Punjabi identity. Why? An Indian diaspora how it is going to affect the relation. Indian diaspora. आ रहा हूँ मैं उसमें. अब हम बात करें डायस्पोरा, तो डायस्पोरा आर 3 types. It consists 3 types of. First is NRI. You know the meaning of NRI? Non-resident. Then PIOs, people of Indian origin. The last is versus citizen. So these PI और PIOs को merge कर दिया गया है. So there is only NRIs and OC. What is NRI? Difference between NRI and OC? They are considered as an diaspora. ठीक है, अब इसको ऐसे समझ. As we know that most of the labor of India they visit to the West Asia, the job. कोई चले गए काम करने. बहुत लोग हैं जो दुबई जा रहे हैं, कतर में काम कर रहे हैं. So one of the
फॉरेन रिजर्व रिसोर्स ऑफ इंडिया रेमिटेंस. रेमिटेंस पता? व्हाट इज रेमिटेंस? व्हाट इज रेमिटेंस? यस, जैसे मान लीजिए कोई दुबई में है, दुबई में है, कतर, कहीं भी है, वहाँ पर वो जॉब कर रहा है, फैमिली यहाँ, तो वो कुछ सेविंग्स फैमिली को सेंड करेगा वहाँ के करेंसीज में. ऐसे या नो? दिस इज एन रेमिटेंस. तो अगर कोई कंट्री ऐसा काम करती है, जैसे H1B अगर कर दी, तो रेस्ट्रिक्ट कर दी अगर को एंट्री इंडियंस को देना, तो रेमिटेंस पे जो अमेरिका में काम कर रहे थे वो यहाँ पर डॉलर सेंड कर रहे थे टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली इन इंडिया, बैक इन इंडिया. इट विल आल्सो हैम्पर इकोनॉमिक रेमिटेंस. तो उसका इफेक्ट इंडिया पे सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बर्डन, इकोनॉमिक भी. Are you getting my point? So whatever the policy is made by the this either developed or developing nation, how it is going to hamper the Indian interest has to be इससे related. Are you getting my point? Yeah. And the last is the last part of the syllabus. Important international agencies and forums, their structure and mandate, right? Important international institutions like United Nations, WHO. So no, United Nations है, right? Then Nuclear Supplier Group, ICJ International. So these are the international organizations. 20. Right? There was a question from G20 prelims also. Question 20 seconds. So here we need to understand there. अब इसमें क्या पढ़ना है हमें? Agency, their structure, mandate. इसके लिए बनी है, का रिलेवेंस आज के वर्ल्ड में है या नहीं. जैसे अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, WHO फंक्शनिंग पे और एग्जिस्टेंस रिलेवेंस पूछा गया. मेनी अ टाइम्स NAM, though it is a regional group, the UPSC has asked a question NAM on the relevance of NAM in it. Any doubt? So this is the syllabus which has been described by the exactly mentioned. After going through the syllabus, you will be positions. पहले जब हमने IR के क्लास आज शुरू, तो एक आइडिया नहीं होगा आपको जिनको कि क्या हमें IR. But now after discussing the syllabus, to have some idea कि अब हम क्या क्या पढ़ना है, अब समझ. After going through, yes or no? Now the picture would be clear. At least एक बाउंड्री बना हमारा कि हमें क्या क्या करना है. So in this, we will see the relations of India and Pakistan, India and Bangladesh, Afghanistan with their historical perspective, not focusing more on historical perspective. सिर्फ हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, नहीं. Certain things more on current. This should be approach every static along with the current. First, we will develop our understanding topic, okay? And then we'll move to current development. Now, what do you think when we talk about the current development? Current development आपका क्या मतलब? आप करंट पढ़ जानते हैं ना, करंट हमें पढ़ना है. करंट कब तक कब पढ़ना? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, करंट कब, 6 महीने का करंट. करंट का मतलब क्या है? मैं बात कर रहा हूँ टर्म्स के.
अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसको हमें इनकलकेट करना विद द करंट। क्या मतलब? तो एक वो देगा, आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे करंट से रिलेटेड। मैं पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा हूँ कभी भी, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई करंट क्वेश्चन, क्या आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप वाइल प्रिपेयरिंग हैव बीन सजेस्टेड कलकेट करंट डेवलपमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन, ये है ना कि आप जो भी उसके डेवलपमेंट है तो आपको करंट डेवलपमेंट करना है, इनकलकेट करना है। करंट का मतलब क्या है उसका? आप नहीं समझ। करंट का मतलब है कि द लास्ट समिट और द लास्ट कॉन्फ्रेंस। नैम मान लीजिए, नैम जो है वो 2020 के बाद कोई मीटिंग हुई नैम में, साल हो गए, तो उसका करंट कब का है? 2020 करंट है, चाहे आप एग्जाम 2024, बट अगर आप 2025 दे रहे हो, 2024 में कोई डेवलपमेंट होता है नैम से रिलेटेड, दैट वुड बिकम। तो टाइम स्पेसिफिक आपको नहीं चलना है करंट में कि करंट देखना है साल का करंट। हाँ, लास्ट अपडेट आप किससे रिलेटेड कर रहे हैं? अगर इंडिया चाइना रिलेशंस या इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बीच में आप स्टडी कर रहे हो, तो करंट रीसेंट डेवलपमेंट चाहे वो 10 साल पहले ही हुई, ये नहीं कह रहे ये तो 10 साल पहले हो गया, हमें 1 साल पहले पढ़ना है, नहीं पढ़ना। करंट में द रीसेंट डेवलपमेंट कब हो रही है इससे मतलब नहीं है, बट द रीसेंट इज करंट। उसके अलावा जब आप पढ़ रहे हैं तो दैट इज हिस्टोरिकल एंड स्टैटिक पार्ट। व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर, दैट द करंट पार्ट ऑफ दिस should be the last functioning or any happening in organizations or in relations, that would be, ठीक है। हाँ, वो तो करंट ही है ना, बिल्कुल वो करंट है। तो मैंने बात जब जैसे G20 की समिट चल रही है इंडिया में, आप देख रहे हैं, चल पूरे 1 साल के लिए इंडिया का प्रेसिडेंट, दैट इज अ करंट। अब मान लीजिए कि इसके बाद G20 सपोज फॉर द नेक्स्ट 5 years, this should be the current related to G20. I am not talking related to everything, I am talking related to that particular organization. नैम की मीटिंग बहुत कम हो रही है, नैम की समिट बहुत कम हो रही है, तो लास्ट समिट जो नैम की हुई तो हमारा करंट है क्वेश्चन, चाहे वो 2030 में है, करंट उसका नैम का द लास्ट समिट। एम आई क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, डू नॉट लिमिट योरसेल्फ विद द टाइम, 6 महीने का करंट या साल भर का करंट मीन्स द लास्ट हैपनिंग। आप जिससे भी करंट, चाहे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट पूछ, तो जो, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीएसएलवी पढ़ते हैं तो पीएसएलवी का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आज हुई हो या कुछ साल पहले हुई हो, दैट वुड बी काउंटेड एज करंट। इज दिस एनी डाउट? नहीं, चलिए, so this is from the syllabus. Now we will क्या हुआ next slides, and the next slides talks about the question trends. Questions क्या है कैसे? So here we have, here I have taken the last 5 years of the mains. This is a mains trend from 2008 20. Each year there was a 4 question international, 50 marks. So 2 questions. Now this 4 questions divided in segments. अगर मैं बात करूं
So this would be of 150 words. One 10 marks. And the two questions of so 10 and 10, 20 and 30, 50. Have a 50 marks of the 4 questions. Important part, because the paper 2 have a marks of total marking, 50 total marking, और questions कितने? 20 questions, right? It means the IR is 1/5 of your paper. अभी तक का ट्रेंड यही चल रहा है. हो सकता है कल को वो 5 क्वेश्चन कर दे, 6 क्वेश्चन कर दे, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा दें. So the importance of IR is increasing day by day. Your paper trend, but this is a current trend of the UPSC till 2022, the last mains. 2023 का mains होना अभी, right? So till the last mains, this is the pattern that there would be 4 questions from the IR section out of 20, out of which would be a direct question. This would be a current based and with the now after this, so here I have distinguished the 4 topic mentioned in the UP syllabus है और year wise from the 2008 टॉपिक इंपॉर्टेंस क्या है कि अब जो मैंने आपसे कहा था, हम जब सिलेबस देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमें एक आइडिया मिलता है कि करना क्या, टॉपिक को ज्यादा फोकस. दिस इज हाउ वी आर गोइंग. दिस इज द 4 टॉपिक्स. द फर्स्ट इज इंडिया एंड इट्स second topic is bilateral regional global groupings. The third is effect of policies and politics, right? And the last one is important international institutions and course of actions and Indian. अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेशनल सिलेबस में भी ज़्यादा करना. अभी मान लीजिए कि आपके पास टॉपिक्स सभी दिए तो सभी को तो नहीं पढ़ सकते. चूज so smart work, this analyze the last year papers. This is what I am talking about, the papers, and find out the topics. नोट बना लीजिए, आप एक रजिस्टर ले लीजिए, रजिस्टर, राइट, और उस पे लास्ट 10 इयर्स के पेपर को खोलिए और क्वेश्चंस का सिर्फ ये लिखना है कि किस एरिया से क्वेश्चन. मॉडर्न हिस्ट्री में भी बिफोर और आफ्टर 45, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस. ज्योग्राफी में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी. Getting my point? So this will, after the analyzing a paper for 10 years, come to know mostly the syllabus topic to prepare yourself. Getting my, this will take time. आपको प्रीवियस पेपर और सिलेबस पे टाइम देना. इट में टेक टाइम अकॉर्डिंगली विद द. अब अगर आप बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक इन द सिलेबस व्हिच इज बाय द यस दैट इंडिया एंड इट्स नेबर. So this is a syllabus and this is year number of questions in year from 1822 what we have discussed. So अगर आप देखिए फर्स्ट कॉलम में India and its neighbor, there was no questions 18 2022. Why? क्या मन था यूपीएससी?
कोई क्वेश्चन? हेलो, हेलो, लाइव नहीं चल रही है शायद, रिकॉर्डिंग है. So this we need to understand why happened this, because the first topic हमने क्या देखा था, हमने इसमें क्या पढ़ना है, anything happening in the neighboring of nation of the India which hampers India or its policies. इस दौरान अगर आप देखें from the 18 to 21 there is no such or much event happened in the neighborhood country. कोई ऐसा मेजर इवेंट नहीं हुआ है. मेजर इवेंट कब होता है? 2021-22 में, जब श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में पड़ती है. क्वेश्चंस आपका आ गया. So this will also help you to understand how to prepare to guess the questions in the year. अगर कोई डेवलपमेंट थ्रू योर ईयर, अब 2022 के बाद ये इकोनॉमिक क्राइसिस का श्रीलंका का इशू खत्म हो गया यूपीएससी के लिए, अभी दोबारा नहीं पूछेगी. रादर अगर कुछ दूसरा होगा या फिर किसी और से कंटेक्स्ट में रिलेटेड. So whenever you are going to give an exam, and if is there any development in this sections has happened, there is a high chance to have a question on that subject. Are you getting the point? Is it clear? Clear? So this is first topic where it says India and its neighbor. It has a questions, one questions from 18 to 22. 22 में अगर आप देखें, अगर हम रोक की बात करें 22 में, ये 22 में this is the sections important international institutions, agencies and fora, their structure and mandate is absent. क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के दौरान उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वहां से क्वेश्चंस नहीं आया. राइट नाउ मूविंग टू, so we will go through this also, vertical and horizontal. Right, so if you see the second point of our syllabus, that is bilateral relations, regional and global groupings. So if you analyze the pattern, it is a most important part or topic of your syllabus जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. 18 to 22 चेंज नहीं हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में. कंटिन्यूअसली दे आर आस्किंग अ 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ईयर फ्रॉम द सेक्शन. So this is an important point of the syllabus which has to be focused. Is it clear? Any doubt? Now, ठीक है. देखिए 2022 में भी questions each from all these 5 years. If you see the third, that is effect of policies, politics and development and of developed and developing countries on Indian interest or Indian diaspora. अगर आप देखें तो this is also something which has been continuously on asking. एक क्वेश्चन आपको हर साल इससे मिल जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉलिसीज जो इंटरनेशनल बना रहे हैं, जो डेवलप्ड नेशंस कर रहे हैं, वो उसको इंडिया हैम्पर्स कर रहा है, इंडिया के इंटरेस्ट को वो कर रहा है. We will see the questions from this section. Right? And the last is important organizations. So after 2020 there was no question been asked. Exam mains, we are talking about the mains. No questions was asked after 2020, which was the year when the WHO was, because a major development happened in the field of health, COVID-19 के रिलेवेंस पे सवाल था. वो रिलेवेंट आज के वर्ल्ड में है या नहीं, हाउ इट इज गोइंग, वेदर इट हैज फेल्ड टू डिलीवर इट्स promises or principle or objective.
So this is how you need to dissect the paper with the help of previous year paper and syllabus. And once you do this, now अब आपके पास फोकस क्या है कि हमें पहले फोकस करना है बायलैटरल रिलेशंस पे, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल 2 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. So first we will focus on bilateral relations. If you are doing by yourself, if you have completed the classes and you are studying by yourself, so and you are writing mains for this year, it means now you will, your first priority will be bilateral relations. Questions हैं वहाँ पे जो भी important bilateral relations हैं, grouping है, हम वहाँ पे cover करेंगे उसे. Potent questions would be there. Second, that effect of any international, any countries, developed or developing countries, policies which hamper India's interest. So this is also an important, because there is a question from this sections. देखिए यूपीएससी को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, हो सकता है नेक्स्ट ईयर इससे क्वेश्चंस नहीं, बट वी गो थ्रू द ट्रेंड ना, राइट. एंड देन दीज टू, द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द सेक्शन सिलेबस विल कीप एट द एंड. ठीक है, कोई रिसेंट डेवलपमेंट अगर इसमें से भी है तब हम इसे रेडी कर लेते हैं, नहीं तो एक बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम देखें. So this is how you're gonna prepare for each of the subject. Is it clear? So now the next slide, that is question. यहाँ पर हम कुछ मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. प्रीलिम्स बेसिकली 2023 के डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार देख लेते हैं. द नेचर ऑफ क्वेश्चन asked in examination. This will give an idea also, sense of confidence also. So this is the importance of previous year questions. आप जब भी कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, उसके बाद immediately refer to the previous year paper, whether it's prelims or mains, and try to solve. The benefit, what will give it is that the benefit of solving the previous year paper is that it will give you an idea कि whether you are going in the right path or not, whether you are in a position after going through the topic, you are in a position to answer the questions or not. If you are in a position at least 50-60% that you are getting the answer, it means you are in the right path. If you are not in a position to answer the questions, it means you need to study and focus more on that part. Right? Yeah? Clear. So yeah, in 20 we are discussing mostly from this questions. There would be 7 to 8 questions from 2023. So the here we need to consider the following statements. पढ़िए इस questions को and try to really देखिए answer यहाँ पे mark किया हुआ. This is not an where we need to discussing our questions answer. Just we need to, मैं आपको prelims और mains के questions के through ना syllabus का एक idea देना चाहता हूँ कैसे questions. So just go through that recently the United States of America and the European Union have launched the Trade and Technology Council. अब European Union is an international organization. Yes or no? USA is a developed nation. इनके बीच डेवलपमेंट, तो मैंने आपसे कहा था ना कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या छोड़ना है. तो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस और पावरफुल नेशंस के बीच में अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो रही है तो वो हमें पढ़ना है. वी आर रिलेटेड टू EU ऑल्सो, वी आर रिलेटेड टू US ऑल्सो. उनके बीच में कुछ ऐसा एग्रीमेंट ना हो जाए जो हमें हैम्पर कर दे. हो सकता है ना इनमें उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया, मार्केट दे दिया यूए का, आप आ जाओ मार्केट ले लो, इंडिया छोड़ दो, हम हैम्पर हो सकते हैं ना. यस और नो? राइट. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट recently the United States of America and European Union have launched Trade and Technology Council. Second statement, that USA and EU claims that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under this control. तो एम क्या है इस टेक्नोलॉजी का? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और फिजिकल प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करना. ठीक, यानी आपको कैसे प्रिपेयर करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर,
इन्हीं क्वेश्चन अगर आप आइडिया लें तो इन ट्रेड के बीच में आपको इसको प्रिपेयर क्या करना है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, ठीक, मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है, अगर मान लीजिए मल्टी लेटरल अगर रिलेशन है या ग्रुपिंग है तो उसमें आप ऑर्गेनाइज कब है, कब बना है, एंड द स्ट्रक्चर, ठीक। so you need to answer this questions. Answer is third, first one is correct, the second is wrong because here physical की जगह क्या है, डिजिटल प्रोडक्टिविटी की बात है, फिजिकल प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है. Why digital? Because the era of digital, the fourth generations, we are in the fourth generations, nahi, fourth industrial revolutions. The digital revolution is known as a fourth industrial revolution, and we are in the fourth industrial revolutions, that is digital revolutions. तो यहाँ पर डिजिटल रेवोल्यूशंस प्रोडक्टिविटी की कंट्रोल की बात है, ना कि फिजिकल प्रोडक्टिविटी की. तो ये आपको स्पेसिफिक होंगे ना आप जब पढ़ने में उसके ऑब्जेक्टिव, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे. इज दिस क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस. इसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ए ट्रीटी. ठीक है, अब ये आपको बता दिया है कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट यूरोपियन यूनियन का एक ट्रीटी है. 3 स्टेटमेंट दिए हैं, अब आपको ओनली 1, ओनली 2 और ऑल 3 और नन ट्रू बताना है. फर्स्ट सी that this stability and growth pact limits the level of budgetary deficit of country of European Union. तो पहले हमें ये जानना होगा, to answer this questions we should understand the objective of this, aim of this. अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी ग्रुपिंग, किसी भी ट्रेड या एग्रीमेंट्स के क्यों हो रहा है, द रीजन इफ यू अंडरस्टैंड, उनका ऑब्जेक्टिव क्या, ये करके क्या, जैसे यू हैव व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास. So if the objective is clear, if you understood the objective, then you can answer the questions. यहाँ पर clearly आपने इसका ऑब्जेक्टिव अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर कर सकते हैं. So whenever you are preparing this type of topic, try to focus on objective and aims of that topic. ठीक है. So the limits the level of budgetary deficit, makes the countries of the European Union to share their infrastructure facility, enable the countries of European Union to share their technology. ठीक है. So answer is only one and the first one is true. ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बनी थी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. ठीक, तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए थी, इसलिए द फर्स्ट वन इज अलग है बिल्कुल. दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग है. नहीं वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना, वो अलग बात है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है. G20 ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट है, यूरोपियन यूनियन इट्स अ ओल्डर वन. यूरोपियन यूनियन जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ना, ये सिर्फ यूनियन कंट्रीज ही उसके मेंबर हो सकते यूरोप के. ठीक है, वो हम करेंगे जब हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ना, वो देखेंगे. दिस इज द डिफरेंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपको इसके बारे में आइडियाज होनी चाहिए. जैसे मान लीजिए कि हमने सिर्फ करंट पढ़ लिया, अब अगर हमें यही क्लियर नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है और क्या है, हम आंसर नहीं कर सकते हैं. नहीं, राइट. सो द आंसर इज 1, दैट इज द फर्स्ट इज ट्रू, इट इज इकोनॉमिक related fact, right? Now moving to the third, the main objective behind this questions is to see the nature of international questions increasing in the prelims also. आपको कैसे प्रिपेयर करना है, right? Now if you see the third one, that consider the following. Recently all the countries of United Nations have adopted the first ever compact for international migration. Migration समझते हैं, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, और किस नाम से, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशंस, दैट इज GCM. क्लियर? सेकंड, द ऑब्जेक्टिव एंड द कमिटमेंट stated in the GSM are binding on the United Nations members.
ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर है, राइट. एंड द थर्ड GCM, दैट इज ग्लोबल कॉम्पैक्ट स्टेट रेगुलेटरी migrations, address internal migrations or internally displaced people also in its objective and commitment. So answer is 1, only 1, right? 1, and the third one is true. किसी पे बाइंडिंग नहीं है, it is not binding on anyone, ठीक है, right? And this is not an United Nations initiative, rather it is an initiative of EU. क्यों है? Because of the Russia Ukraine war. आप देखिए तो अफ्रीकन नेशन से यूरोपियन नेशंस में काफी माइग्रेशंस होते रहती है, नहीं, आफ्टर दिस, राइट. एंड नाउ इट हैज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द यूक्रेन एंड रशिया conflict, right? So only one is true, though the third one is correct. First is wrong because this is not an United Nations approach, it is an European Union 27 members approach. Okay. Now the next questions, if you see, now here the next question, this questions you can say it is also related to, though it is related to international relations, it can also be put under the geography, the mapping. अब आपको रीजन दिए हुए मेंशंस हैं और रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज, किस वजह से ये न्यूज में है. इट इज नॉट आस्किंग कि किस एरिया में है, इट इज आस्किंग इनको न्यूज में क्यों है, राइट. सो दिस इज अ 3 एंड यू नीड टू करेक्ट दैट अब करेक्टली मैच्ड, ठीक है. अब करेक्टली मैच में अगर पता एक भी आपको होता, पहले का ऑप्शन होता ओनली 1 एंड 2, 2 एंड 3, तो आप कर सकते थे. यहाँ ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3. The question does not make exam tough. The level of questions does not make it tough. The level of options make it tough. तो अगर एग्जाम को टफ बनाना है तो ऑप्शंस को ही बदल दीजिए, एग्जाम टफ हो जाएगा. इसकी जगह मैं यहाँ पर ऑप्शंस ऐसा होता है दैट ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3 मान लेते हैं, तो थोड़ा इजी होता. अगर एक भी पता होता तो एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते थे, यहाँ तो वो भी नहीं चलना है. So you need to prepare for the changes UPSC is going to introduce. अब यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं. गेस वर्क डज नॉट वर्क हियर. इसमें जबकि थोड़ा बहुत एक भी आंसर आपको पता होता तो यू कैन एलिमिनेट, ठीक है. तो नॉर्थ किवी एंड इतुरी इज अ रीजन फॉर न्यूज वॉर बिटवीन आर्मेनियन अजरबैजान. नो, it is Congo, dispute in Democratic Republic of Congo, ठीक है. नागरो एंड कारबास, it is a part of Azerbaijan, ठीक. खेरसो एंड अप्रोजेजिया, it is a region in Ukraine, जिसको रसिया ने क्लेम किया है कि हमने अपने अंडर ले लिया है. It's not related to Israel and Lebanon, is from Ukraine. So my motive behind showing you this question is to understand the nature of questions in examination and the importance of this topic. तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम प्रीलिम्स के प्रिपरेशंस को बैठते हैं ना, हम आईआर को नेग्लेक्ट करके बैठते हैं, या फिर एटलस को ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव व्यू से, सिर्फ ज्योग्राफिकल व्यू से ही एटलस को करते हैं, इंटरनेशनल व्यू से नहीं करते हैं. But here you need to focus on international relations. नहीं. अब देखिए next, there is again a two statement that Israel has established diplomatic relations with some Arab states, right? Second, the Arab Peace Initiative mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League. This is a direct questions. अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो आप बताएंगे, नहीं पढ़ा तो नहीं बताएंगे. तो the first is correct, second is incorrect because Israel does not sign it. Israel ने साइन
नहीं किया है इस पैक्ट को, जबकि दोनों के बीच में रिलेशंस, ठीक है। अभी आप देखिए तो चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था अरब नेशंस और इसराइल के बीच का टेंशंस को दूर करने का। दिस इज अ करंट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि चाइना ने मेडिएशंस का रोल प्ले किया है, बहुत पुरानी दुश्मनी इनके बीच में, इसको खत्म करने का काम चाइना ने किया है, ठीक है। अगेन देयर इज अ area mentions and country where it is located, this can be considered as an geography mapping question, atlas की basically ये क्वेश्चन आप किस में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन दोनबास, सीरिया, खांचीन, इथोपिया, टिगरी, नॉर्थ यमन, the answer is none, it means none is correct. This here Ukraine, Donbass in Ukraine, then Myanmar, और ये सब करंट बेस है, यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी म्यांमार में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, यूक्रेन में तो हो ही रहा है, एंड दिस इज इथोपिया। ठीक है, देखिए G20 से क्वेश्चंस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20 इंटरनेशनल ग्रुप। प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस आपके वो 4 टॉपिक से रिलेट हो रहे हैं। G20 groups was originally established as platform for the finance ministers and central bank governance to discuss the international economic and financial issues. It means हमें G20 के historical background को पता होना चाहिए, क्यों बना, why it has been established, then only it can be answered. Then digital public infrastructure is one of the India's G20 priorities. Means it is current related. अब इस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यू नीड द नॉलेज ऑफ बोथ स्टैटिक एंड करंट, so both are true. ठीक, so this is a questions from the prelims. Now the next is questions from mains. बोर हो गए क्या? अभी तो टाइम है, हमारी क्लास तो 5-7 मिनट है, बस एक ओवरव्यू कर लेते हैं, देन वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक टुडे, वी विल स्टार्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, बस जस्ट फिनिश दिस ओवरव्यू क्लास, राइट। एक बार दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, दैट आई हैव शोन यू द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, दैट इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड, द रीजन बिहाइंड इस 2021 में श्रीलंका में कुछ डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, दैट्स व्हाई द बायलैटरल इंडिया एंड इट्स नेबर से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देन दिस इज एन रीजनल ग्रुपिंग एंड इंटरनेशनल ग्रुपिंग, SAARC and BIMSTEC both is a regional grouping, right? This is Bay of Bengal grouping, the countries in Bay of Bengal is a grouping of that. SAARC, South Asian Association of Asian Nations, South Asian Association, right? Then how I2E2, this is an international groupings, India, Israel, UAE and USA. Okay. Then clean energy is the order of the day. Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics. ये क्वेश्चंस किससे टॉपिक से था? लास्ट, दैट इफेक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल, जैसे आपका इंटरनेशनल सोलर और एसोसिएशन है या नहीं, राइट राइट, उससे है, तो उस पे इंडिया पॉलिसीज कैसे चेंज हो रही, तो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम देयर। अगर हम 2022 की बात, 2021 में क्वेश्चंस की बात करें अगर हम, तो देखिए, if the last few decades were of Asia's growth story, the next few decades are expected to be Africa's. अब ये कंटिनेंट है, यहां पर आपको बताना है कि लास्ट फ्यू डिकेड्स मींस कैसे एशिया, चाइना, जापान, इंडिया, बांग्लादेश ये ग्रो कर रहे हैं, एशियन नेशंस,
अब अगला कुछ समय अफ्रीका का है, क्यों? क्योंकि वहां पर मार्केट है, रिजर्व मिल रहा है, अब उनका मार्केट है, राइट? इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका। यहां भी दो क्वेश्चंस मिल गए आपको, पहले इसे डिस्कस करना हमें, कैसे ये स्टेटमेंट को हमें सही बताना है, और दूसरी बात इंडियाज इन्फ्लुएंस ऑन अफ्रीका। अब इंडिया अफ्रीका में क्या क्या काम कर रहा है, किसके साथ क्या रिलेशन है, उसका क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या पॉलिटिकल अप्रोच है, ठीक है? नेक्स्ट, द यूएसए इज फेसिंग एन existential threat in the form of China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union. Played. अब ये क्वेश्चन जो है इसमें इंडिया का रिलेशंस कहीं, ये इंडिया और अमेरिका और चाइना के रिलेशंस का क्वेश्चंस कैसे चाइना ज्यादा थ्रेट कर रहा है अमेरिका को यूएसए से कंपैरेटिवली, ठीक है? देन critically examine the aims and objectives of SCO, उसका एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, देन व्हाट इंपॉर्टेंस दैट इज होल्ड फॉर इंडिया। अब इंडिया कैसे इंपॉर्टेंस है, क्या कर सकता है SCO के थ्रू, क्यों ज्वाइन करना चाहता है इंडिया SCO, क्या स्टेटस है SCO में इंडिया का, ऑब्जर्वर है, मेंबर स्टेट है, क्या है, हाउ इट कैन अचीव इट्स फॉरेन पॉलिसी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू SCO, ठीक है? Then the newly tri nations partnership AUKUS, ये सब करंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन स्टैटिक इन्वॉल्व है इसमें। ऑकस में कौन कौन सा नेशन है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, is aimed at countering China's ambitions in the Indo-Pacific region. It is going to supersede the existing partnership in the region. Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenario. अब AUKUS का आपका स्ट्रेंथ क्यों बना, मोटिव, ठीक है, आपको डिस्कस करना है, ठीक है? So this is questions from the all the 4 sections. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आ गए, रीजनल ग्रुपिंग से क्वेश्चंस आ रहा है आपका, देख रहे हैं ये जो बायलेटरल और रीजनल ग्रुपिंग का है वो आपको दो दो क्वेश्चंस दे रहा है, SCO और AUKUS groupings, the second part, yes or no? 2020 में अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं, what is the significance of India US defense deals over India Russia defense deal, bilateral relations का topic, right? Then Quad, again groupings the questions, international groupings. So the relations, bilateral relations, the point why I am showing you these questions, just to show you the evidence that the topics bilateral relations of India with the internationals, whether the regional or over the world, and the organization agencies, whether regional or international agencies, played much important role in your preparation, ठीक है? So this is all what we have discussed. This is the 18-19 questions. So we'll move to the next. We'll start with the next our topic. Here we have also discussed how to prepare the IR static. We will discussing on statics and current. Here we have discussed what you have to do and what the class will provide you. Be regular on in class, right? And go with the newspaper. Have an atlas. जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस का न्यूज़ पढ़े ना तो एटलस रखें साथ में, ताकि आप एरियाज का जब देखें तो एक ओवरव्यू हो आपको, आप पिक्चराइजेशन के बाद अच्छा पढ़ पाएंगे, ठीक है? देन नोट मेकिंग, right? Previous year papers, syllabus, this has to be with you, okay? So hope you all enjoy the class and we can meet in the next class. From there we can start our class, okay? So thank you and have a nice day.